Entry, rapping. क्या बोलना चाहोगे? How are we feeling today? Today we're not going to win one office, we're going to win 2 offices. हम जीत गए यार, अभी आए नहीं, उन्होंने पहले दे दिया। हेलो, तो we just changed. अभी UNI की शर्ट पहन ली है, this is our pass. And the situation is kind of crazy here. इतना प्यारा बना हुआ है, we haven't been to Collabs before, we've gone to Daftar Khan, we've been to our space, but Collabs is on another level. हेलो, मुबारक हो सबको। आई गॉट अ न्यू माइक। ये अब्दुर्रहमान है, ये मेरी जान नहीं छोड़ रहा है ना? हाँ जी, मैं तो छोड़ रहा हूँ। अच्छा, दिस इज़ हादी डूइंग द BTS। हम गए हुए थे पिच टू विन पे और हम वहाँ पे जीत के आए हैं, मगर इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो पहली पोजीशन को 2 लाख मिल रहे थे, 10% प्राइवेट ऑफिस मिल रहा था। सेकंड पोजीशन को 1,25,000 मिल रहे थे और 6 पीपल ऑफिस मिल रहा था। थर्ड पोजीशन को 75,000 मिल रहे थे और 3 पीपल ऑफिस स्पेस मिल रही थी इन कोलैब्स नास्टअप। एंड दिस इज़ हाउ इट वेंट। पानी बहुत ज़्यादा पीता। आई ट्राई टू डू 4 liters a day। आज हो गए हैं 1.5 and it's just 9 AM। तो but that also means कि वॉशरूम ब्रेक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो अभी मैं वॉशरूम आया हूँ। This is absolutely beautiful to be here right now। It's beautiful। ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पार्क करते हैं और फिर यहाँ से हम अंदर आते हैं। रिव्यू करो क्या क्या चीज़ें हैं। और डायरी, it's really nice। और क्या? ये डेस्क पे भी है, तो we have now 6 of these। ऑफिस भी भरते हैं। This सस्ता पेन। Shitty, that's so shitty। अच्छा, a little background story here। मैं सुबह उठा था 7 बजे for a class। I went to my class, had a little argument with the teacher। और फिर मैं यहाँ पे आया था। तो I had already been having a very tough day और वो मैं भी समझाऊँगा तलहा को। मेरी बेचारा आज प्रेजेंटेशन में अपने जैसे लड़के आए, She gave me 50% marks क्योंकि मेरा font 12 नहीं था, 12.5 था। प्रॉब्लम 5 में से मतलब 50% कर दिया ना उसने। 5 में से 2.5 दिया उसने। कहती फाइनल सबमिशन आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल। ये किसके बारे में? रिसर्च मेथड्स। और इसका सीन क्या है कि वो 2 सेमेस्टर चलती है, 1 सेमेस्टर नहीं चलती है। इफ शी फेल्स मी आई हैव टू रिपीट 1 whole year। फॉन्ट की वजह से। हाँ यार, कितनी क्रेजी बात है। नहीं करेगी आपको जाके ना उनके गोडे पकड़ने की। अभी इनको ईमेल लिखता हूँ। गलती हो गई। अच्छा, a little back story here। This was 2 months back। I'm currently in July और मैं इसको अब जाके एडिट कर रहा हूँ। I know मेरे 80 viewers आप मेरा वेट कर रहे थे, but we're here now। We had this conversation और फिर हमने बोला कि थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं और हमने थोड़ी सी वॉक की and then we found a cat which was the highlight of my day। I love cats so much। Me not so much। अच्छा? No। Yeah, they're just everywhere। The animal that I like and I would ever want to keep is, but it's fucking expensive, a horse। ये कैसा शौक है? क्या बताना चाह रही हो? हंसी भी अंदर नहीं। बाहर जाना चाह रही हो? आपको पकड़ लूँ, मारोगी तो नहीं? खुल गया। आ जाओ। आई थिंक इसके बच्चे हैं अंदर। आ जाओ। नहीं इतना जेन्युइनली रिएक्शन तो दो यार। ये कह रहे हैं ऑफिस हो तो ये हो वरना ना हो यार। आप फिक्र नहीं करो, आपका ऑफिस जो फ्यूचर लग रहा है नहीं होगा आपका ऑफिस। अब ये देखो हम बैठ गए। The competition is about to start।
और काफ़ी कम लोग आए हुए हैं, मज़े की बात है। दे प्रिटेंडेड लाइक बहुत शॉर्ट लिस्ट हुए हैं 100 में से 8, मगर 8 में से सिर्फ 4 आए हैं। हमारी बारी जो है ना 4th नंबर पे है और इट फील्स लाइक विल बी द लास्ट वन। 93% पे ये वाला आई रैन आउट ऑफ बैटरी, वो मैं चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। अजाब है यार, एक कैमरा को संभालना एक अजाब है। हमारा कमेंटेटर देखो, इस गाय जो वो UFC की करता है कमेंट्री, ऑल्सो कॉन्सर्ट्स की भी करता है, मगर वो यहाँ पे भी आया हुआ है। पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, बट मैं आपको बताऊँगा, आप जीतो या हारो इट डजंट मैटर, ठीक है। जीत अल्लाह के हाथ में, आपको गिव योर बेस्ट, सही है ना। सो बेस्ट ऑफ लक। आई तो किसी बड़ों पे स्टार्ट करना है, सही है। And we are with you. अच्छा, तो while the event was happening, उन्होंने बीच में अनाउंस किया कि people can scan the QR code and vote who they think is the best candidate. कर रहे हैं। आप बताएं, वोट दिया? वोट दिया। वॉइस वोट अपना है। यार आपको पहले पे रखा उन्होंने। ऐप क्या नाम है? 50% था आपको। 5 minutes to pitch, and very lovely name for a company, by the way. U&I. Hello, everyone. My name is Hadi. I'm here with Hamza. Thank you so much for coming out here, seeing us today. हमारा idea का नाम है U&I. This is an application made specifically for university students. Hence the name U&I, which is also a word play कि आप और मैं. We'll move on to the problem. हमने एक ही problem देखी मार्केट में कि मुझे पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में कौन रह रहा है, अमेरिका में मैंने दोस्ती किससे करनी है. But I don't know who's sitting right next to me in my class. Who's sitting right next to me in the class that's next to my class. हमने देखा कि जो communities हैं वो disjointed हैं. Facebook की वजह से, Instagram की वजह से I'm able to connect to people all over the world, except for people that are in my community. हमने क्या किया वो अभी आपको हमजा बताएगा. इसके साथ साथ if I divide the problem into the other half, the second half states कि जो corporates हैं उनको advertise करना है to Gen Z, to younger people, to our users. और वो advertise करने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है. या तो वो billboard लगा देंगे, या तो वो Facebook के ऊपर ad लगा देंगे. We came up with a solution for that Hamza will now tell us. This is the problem that I was talking about. कि brands advertise करना चाह रही हैं, collaborate नहीं कर पा रही हैं, गुलाम है इधर, उससे कहना यार कपड़े में बनाता ही 20 साल के लोगों के लिए, उनको नजर ही नहीं आ रहा मेरी ad कहाँ पे जा रही है. We came up with a solution that Hamza will talk about. So basically what we, as Hadi explained the problem, what we came up with the solution was कि अच्छा problem students में exist करती है, problem brands में exist करती है. So what if we connect those two things together in a way कि we create a platform that is सबसे पहली, सबसे most important thing, that is verified. Every single profile that you see on the platform is 100% verified. ऐसा possible ही नहीं है कि उसके ऊपर कोई profile बनती है, कोई account बनता है, that is by a fake account या that is a bot. और अब बहुत मस्ते चलते हैं Reddit का कि it's filled with bots. So we came up with this solution that is a closed loop networking platform. So a LUM student can connect with other LUM students, can network with other LUM students, but within just their small community of LUMs. Same with NUST, IBA, FAST, all those universities that we have in Pakistan, they can network with just their own university. Moving to the solution. We have verified profiles, as I mentioned. The people that you can connect with are only your university students. Then we have multiple different ways of communication. We have a discussion forum where people can connect in a way that they can discuss anything they want for that university they are in, for that community that they are working on. We have events tab, community hub that we call. It basically allows you to see what's going on in your campus, in your community. So any event happening, any social work happening, anything related to that happening, we allow students to post here and people can join the activity. Then we have chats, individual chats. Moving on to the other features that we have provided are basically university specific. Students can see के course schedule अपना किया हुआ है, they can connect with other students who have similar time slots and who have similar breaks. So मैंने अगर table tennis खेलने जाना है, I can see what other students have the similar free slot in that period and I can connect with them. And then we have more specific networking. The second slide shows basically you can connect with specific people within your university. So मैं अगर किसी CS major से connect करना चाहता हूँ, तो I can specifically select that and I can connect with that. And then as Hadi mentioned कि this helps brand a lot. हो सकता है LAM has to target some specific major या कल पे has to target some specific major to sell some specific thing. They can then immediately target those specific students.
Moving on to the next part, Hadi. We have launched in 12 different universities as of now. हम pilot कर रहे हैं बाकी universities में, but we're inside LUMS, we're inside LSE, we're in ComSats and FAST. If I move on to the very next slide, we have over 8,500 users already. और ये आज सुबह stats था, अब तक we're about to touch 9,000, which has been amazing growth for us. These are users that are actively using our platform. If we move on to the very specific numbers, we'll just move on. This is the business model. In shorter words, it's ads. Customer हमारे पास है, आपने उसको क्या display करना है, that's completely up to you. If we move on to talking about our team, these are the opportunities once people can come post job posts. Alumni होते हैं, वो job industry में चले जाते हैं, वो कहते हैं यार हमने job के लिए किसी बच्चे को ढूंढना है. They can come here, post directly. This is people. These are people that we're piloting with. So these are our clients. These are people that are advertising on the platform currently. If we move on to the very last slide, this is our team. So our team comprises, and I know this is a big number, of 130 people. अब इसमें होता क्या है कि हमें कैंपस में लॉन्च करते हैं, उसमें एम्बेसडर्स की टीम होती है. So each campus has their own startup situation. We have at the very top people in our team, people that are present here today, which is social media marketing. We have our sales team, we have DevOps, we have UX design, front and back end, machine learning, and then of course, handsome Hamza and handsome Hadi. Thank you so much for this. You talked about your parents with your family, do you have any connections or companies utilizing this? Have you generated any revenue so far? Or are you still buying them? That's right. We are basically doing multiple models for them. In a way, we are currently, if I go back to the slide, we have been working with these companies in different ways. So as Hadi mentioned, we are not just giving them advertisement area, meta ads की तरह ad नहीं लगा रहे आप सिर्फ, we are partnering with them. So based on every company that we target, like Stuff हो गया, Paymo, HCM. For HCM is an educational consultancy. So for HCM, the target market and the way they are marketing to students, it's different than what Paymo would do or what Smash would do. So we basically partner with them and we see कि उनका target किस तरह उनको target करने students को. And then we cater the platform towards that. कि HCM के लिए we are not going to show a banner ad for them because that is not going to benefit them. HCM के लिए what we do is we create content on the platform. We make them create content that students would like. And it's not direct marketing. Right, so we call it a collaboration, a partnership instead of an advertiser. Even though they are paying us, but we're calling it a partnership. कि हम collectively मिलके students की मदद करें. अगर आपने कपड़े अच्छे दिखा रहे हैं तो students की मदद हो रही है. अगर education consultancy है तो student की मदद हो रही है. As of now, there is nothing in the developer side that they can come in and check कि अच्छा इतने numbers ने देख लिया. But they see the sales growth regardless. So I understand how you're going about trying to like how we will monetize or have you been able to monetize so far? Because you're so okay, that's great. You're doing as a cost of one. Have you been able to monetize this strategy? क्या is your like charging them per click? Is it the review? Or what's the plan? If you haven't done that so far, आगे जाके किस तरह से करना? So we have a monthly charge that we're using with HCM, which is our very first client. So we give them a number and they pay us in that month, and फिर उनको जो है उसका result मिल जाता है. Yeah, I have a question. I think Shesha also tried to ask that and be specific how much revenue you have generated so far. Revenue? Because you have started since 2023. Yeah. So how much revenue you have generated? Revenue हमने generate करना शुरू किया in the past 2 months. How much of that? 300,000. 300,000? Yeah. How? We basically we did not launch in 2023. We started in 2023 with the development. तो हमारा basically if I tell the phase जो चला था, that was idea was the problem was seen in 2023. Then we did some research over a couple of months कि ये problem तो exist करता है, and we did not just focus Yeah, on but dance. let's be specific now. हाँ, तो कितना revenue बताया? 300,000. और first month में कितना था? So you just double it up? No, we doubled it, of course, because we have the same client, and it's a recurring client, right? So once a client signs on, they stay for forever because उनको फायदा इतना नजर आ रहा होता है. So we just have one client. CTO कौन है? And what's the technology stack and how you are maintaining the privacy and data protection? Right. The stack is Flutter on the front end, Django backend, Postgres database, AWS where we are hosting. And for the privacy part, which specific area are you talking about? The entire data. It's like encrypted by HTTPS, and then the encryption for passwords and all is used through Google's authentication system.
and then we are also using the Junki latest AES 256 GA for chats and the specific private communication. So any algorithms you are using? ये जो बने होते हैं ये तो ऐसे certificates मैंने किया है. Okay, thank you. Do we have anything else? You mentioned the term 8,500 users. Congratulations, getting users is an important milestone. But in terms of an app or a social platform, user is a very tricky term. Does it mean somebody signed up? Does it mean weekly active user? So would love to understand, and also would love to understand what is the ratio between user and active users. So basically 8,500 is the sign up number. The people who have basically we have acquired them and they have signed up, they've started using the account, their account. On a daily active, we have basically around 2,500 users on a daily active usage. This is unique number. For monthly, we have around 60 to 70% of monthly retention. For the engagement part, these are some numbers and they vary because it's a university. तो अभी फाइनल पीरियड चल रहे हैं तो हो सकता है अभी थोड़ी कम हो जाए या हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में इसी पीरियड में ज़्यादा हो जाए. So it depends on the demographic of every single university. But these are about the same. And in short, we just have more than 50% users that are actively using the application daily. That's the stats that we have. Got it. So I just want to understand, you have used 5.7k users with 6 months retention, and you launched in... This could be a bit older, but I think this number is higher, Mustafa, yes. So I think I forgot to change that, but around कितना बनता है? 8,000 में से 2,000 times 25%, 30%, yes. So basically that is the retention on a daily basis. Okay. Thank you so much. पिच दे दी, अभी पिच देकर आए हैं. इट वन काइंड ऑफ नाइस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कुड बी बेटर. मगर काफ़ी कूल हो गया. पिछली में वीडियो अटैच कर दी होगी ये वाली. But let me check. Oh wow. Also the meeting room is open. I can talk much more freely now. ये इनका meeting room है. अच्छा पिच हो गई है, अच्छी गई है काफ़ी. I would give it a 7 out of 10. It could be better. Pitch ठीक थी. Question and answer session were a little more tricky. We have 6 judges, तो हर जज की अपनी बात होती है और टाइम लिमिट बहुत कम है. So we only had 5 minutes to answer the questions. और वो आंसर कर दिया more or less. मगर उसमें कुछ it wasn't up to their satisfaction. और फिर एक में बड़ी फनी चीज़ हुई. They asked कि हमारी यूज़र की रिटेंशन कितनी ज़्यादा है एप्लीकेशन के ऊपर. मगर उसमें हुआ क्या कि I said कि यूज़र रिटेंशन is 50%, is more than 50%. मगर मेरे राइट पीछे स्लाइड में लिखा हुआ था कि it's 25%. तो that was kind of there. उसमें थोड़ा सा फंबल कर दिया. But उसके अलावा we're feeling pretty good. We do a pretty good pitch. There's going to be a little break. अभी 12:30 हो रहे हैं. जैसे ये लोग ख़त्म करेंगे इसके बाद हमारा ब्रेक होगी. I'm super hungry. We're going to eat something. ये हमें खाना नहीं दे रहे कोलैब्स वाले. If you're watching this. Also I love the camera so much. I wish I could afford it. ये भी 3,000 का हमने रेंट किया और मेरे दिल को दुख पड़ गया. इसकी बैटरी का बहुत इशू है. So we have 3 batteries. I'm constantly changing them. I wish I can afford this one day though. Afford a camera and then just take it with me everywhere. It's so fun talking to a camera. It's so fun knowing I can watch this when I'm 30 and then I can come back to this and then watch how amazing life is. I feel really thankful. There's this theory मुझे उसका नाम नहीं याद है. उसमें ना वो कहता है कि जब आप एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ करते हो तो होता क्या है कि बाकी चीज़ें बहुत बोरिंग लगना शुरू हो जाती हैं. I think it's called the boring effect. So once you reach that level of high, everything else in life becomes kind of dull. अभी वो मोमेंट हुआ है कि I just reached a level of high. बहुत मुश्किल लग रहा था सब कुछ, फिर भी जाके पिच की. अब for the rest of this week, for the rest of this month, everything will be kind of dull. मैं कोई मूवी नहीं देख सकूँगा, कोई सीज़न नहीं देख सकूँगा. Because my own life has become so exciting. So I wish I can live my life every single day of my life like this, and that would be really nice. I got bored, तो अब मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ. It's a really pretty place. आगे देखो. La vida es un carrusel, It says there is a gym here and Sasha's Cafe. I see Orbit Cafe. Do you guys see that? I'm gonna go check it out.
There's another cafe, which is also nice. इधर से हम एंटर हुए थे, अब हम बिल्डिंग के मतलब ऊपर वाली साइड पे आ गए. This is a collaboration with NASTP, National Aerospace Science and Technology. I'm gonna go back now. La vida es un Cheese, please. Yes, please. हम मिले हैं, AI का काम कर रहे हैं. He's wonderful. We love him. मज़े की बात है कि खाना लग गया खाने में. उस वक्त से ना हम ढूंढ रहे हैं कि खाना लग जाए. कसम से. Crazy. What is going on? What happened? या ये गलत है. ये मेरे बगैर की मीटिंग कॉल की है. मैंने आपको कॉल किया वरना आप लोग भाग रहे थे मेरे से. The amount of times that joke has been made. पहले दिन से और ये मजे की बात बताऊं. खाना अब आओगे. अब सब आओगे. आप नजर आ रहे हो. सबको नजर आ रहे हो. आओ जाके खाएं. Oh, it's not okay? जाओ यार वापस रख दो. ये कितने का है? वो भी 250 का. और ब्राउनी कितने की है? ब्राउनी 120. और फ्राइज कितने का है? ये ले भाई 250. मेहरबानी यार. पूरे 250 हैं. 250 ये लो यार. चलो यार आपको ट्रांसफर कर सकते हैं बाकी हम. और थैंक यू सो मच. मैं दे रहा हूँ. Is this worth 250? Round 2 is about to start. और अब अनाउंस होंगे शॉर्टलिस्टेड जो हैं लोग, वो लोग अभी अनाउंस होंगे. जीतते हैं मेरे, ये जीत जाएंगे, ये टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने. कहा इजी में. अच्छा, एक बहुत मशहूर मेरी कहावत है, जस्ट आस्क. ये मेरा मोटो होगा मेरे ब्रांड का. जस्ट आस्क फुल स्टॉप. I saw a guy, उसने टोपी पहनी हुई थी, collabs की, and it was beautiful. I liked it so much. I liked his demeanor so much. I walked up to him और मैंने बोला यार ये टोपी आपने कहाँ से ली है? And turns out he's the founder of Collabs. और उसने 3 दफ़ा इशारा किया किसी को, and I'm hoping that they're going and bringing my cap right here. Guy gave me his number. I have his number. I'm gonna text him, hit him up, call him over to our office or go to his office. But networking is just going up to someone and asking. And that's the best thing about it. Robotronics Pakistan has made it around 2. He is like fun. He is like. Thank you so much. Thank you so much. Good. हमारा question and answer session हो गया. It went amazing. It was supposed to be for 10 minutes, but it went on for 20 minutes. यहाँ तक कि जो timer था बंदा, उसने आके बोला भाई सबने घर जाना है, आप लोग उतर जाओ, अगले बंदे ने भी ऊपर आना है बारी करने के लिए. But the judges absolutely loved us. We loved them, and it was genuinely a very heartfelt conversation about where we are and where we want to be. To the point that they genuinely wanted to implement all that we have implemented to their own businesses. I'm expecting a very nice result out of this. So top 3 easily, I think number 1 would be another company. टोपी नहीं मिली, हमें लगा वो टेबल पे पड़ी हुई टोपी, मगर वहाँ पे नहीं है. But we're expecting the best. मेरा ना सीरीज चल रहा है, just ask. कि कुछ भी चाहिए वो मांग लो मिल जाएगा. And we're gonna wait and we're gonna keep asking until we get that cap. It's absolutely beautiful. This is the guy. जिससे मैंने टोपी की बात की थी, the co-founder of Collabs. इसका नाम है अलीशा. I swear to you, if I get the cap today, I'll be the happiest man on earth. 3 co-working seats. We can make it if you try. It is you and I. Let's go! Make some noise for you and I, ladies and gentlemen. It takes a long walk out of the stairs. Ladies and gentlemen, make some noise for the third place finishers, you and I. 6 co-working seats. Lightweight. Give it to me.
वन थर्ड पोजीशन मैंने प्रेमोनिशन पहले से कर दी थी और फीलिंग प्रीटी गुड कैप मिल जाए बस थैंक यू सो मच जी ऑफ कोर्स प्रेमोनिशन मगर अब टोपी ना उन्होंने बाइकिया करवाई है कहीं से बिकॉज यहाँ पे पूरे ब्रांच में उनके पास नहीं थी विच इज़ इनसेन टू मी आई एम स्टिल वेटिंग फॉर इट आगे एग्जीबिशन पे जाना है मामा की एग्जीबिशन लगी हुई but I'm still gonna wait for my topi. I'm not going to leave without my topi. If I get that topi, guys. जब तुमने लास्ट में मूव चलाया था ना वो बड़ा की रोल था वहाँ से डिसीजन का चेंज हो गया था उससे बात करें हमने पहले से तैयारी की थी बात लेकिन मुझे ये पता है कि तुमने जो भी बोला था ना एसी का क्रेडिट आता है थैंक यू सो मच मैन थैंक यू सो मच हाँ प्लीज हम फारिग हो गए और अभी खबर आई है कि मोहम्मद यार के नाम से भाई आ रहे हैं टोपियाँ लेके तो वो हम पकड़ेंगे और फिर हम आगे चले जाएंगे बॉयज हाउ आर वी फीलिंग गुड डू यू फील लाइक यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड बोलो हाँ बोलो यस क्या हो गया बॉयज रिकॉर्ड हो रहा है अरहम भाई जी भाई मैं क्या कर रहा हूँ पीछे नहीं अरे भाई क्या चीज़ है ओह फकिंग हेल आई एम ना कह रहे मैं इसको एडिट कर स्क्रैचिंग माय सेल्फ ये कौन फोटोग्राफर था वाह जी वाह ये देखो टोपी समझ रहे हो मैं जा रहा हूँ भाई एक सेकंड आपको पकड़ाता हूँ टोपी अब वो क्या बताएं कब से ढूंढ रहे हैं टोपी शुक्रिया मोहम्मद यार साहब ये आप एक मुझे दें दे दें मैं कब से यार ना करो यार मेरे साथ ऐसे मुझे वाइट वाली भी चाहिए एक टोपी ये पकड़ते हैं अनूरल की चाहिए प्लेन चाहिए We did it boys कब से ढूंढ रहे थे always remember to just ask winners throughout bye we are on our way to mom's exhibition हमारा ये ख़त्म हो गया एक दिन में ही 2 चीज़ें थी I'm kind of late. I really need to be there for my mom. उनकी ना solo exhibition हो रही है. My mom is a professor at NCL. तो she's really excited and we're all really excited for her. वो उसको मैं अगले vlog में डालूँगा. Because I need to gather content and I need to be posting more regularly. But yes, today was amazing. Always remember to just ask, and this is a memorandum for myself. Remember to keep growing, to keep showing up to places, to keep saying yes whenever you can, and to just meet people. Everyone loves your energy, you love everyone's energy. If you're not doing anything wrong, किसी का बुरा नहीं सोच रहे, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हो, तो जो भी कर रहे हो वो करते रहो. और of course we haven't been successful through and through. There have been so many backlashes. मगर अब क्या है कि I have 3 different office spaces, which is amazing. So if I'm in Gulberg, I'll come to Collabs. If I'm in DHA, I'll go to LUMS. Or if I'm near my house, so I'll just go to LSE Wala Incubation Center. And so we have 3 incubation centers. And now that I know the founder, because of course, उनसे मैंने ये टोपी मांग ली, and he was so kind to give this to me, तो हम event करवा सकते हैं यहाँ पे, और जो कि हम करवाएंगे, and he will give us the place for free, because he likes us, and he knows that we're talented individuals that are looking to help other individuals in the same space. But today was amazing. Thank you so much for being here. Thank you so much for watching. I'll see you guys tomorrow. Bye.